So again, let's start with Nifty 50 1 hour. So as mentioned in my last video, pretty much same. Nifty is still in the same zone, hasn't gone above or closed below 18,000. So I wasn't really expecting a big move either side. That is the reason probably this was more like a sideways kind of a day to day. And let's see if 1 hour closes below 18,000, I'll look for shorts in Nifty. So what happened in intraday? If you look at any index, that is Banknifty 3-minute, it's basically kind of sideways, very range based, 42,300 to 42,500, and at the end it was more like VWAP to 42,300. In Nifty it was basically sideways. We also gave a trade which worked really well. The trade was based on this visual. If you look at a Nifty 15-minute chart candlestick pattern, you will see this visual and this visual are pretty much this very similar. So hence wasn't expecting any up move and was a scalp shot after 1 o'clock, which is what happened. After 1 o'clock it was a scalp shot. So the analysis also worked, which I had shared on YouTube. Positionally, I'm still waiting, as I mentioned yesterday. Still waiting to good close below this for shorts. Not looking for longs here. Nifty 50 में 1 hour में कुछ भी नहीं हुआ. जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये जोन वैसा जोन है जहाँ पर अगर शॉर्ट्स आएंगे तो इसके नीचे मुझे शॉर्ट्स चाहिए. अभी इस जोन में तो मैं कुछ करूँगा नहीं वैसे भी, तो मैं वेट कर रहा था साइडवेज के उसका मूव आने का या फिर कोई अप मूव आने का और मैं वहाँ से शॉर्ट करूँ, और वही हुआ. मैंने 1 बजे के आसपास 12:45 के आसपास एक ट्रेड दिया था जिसमें मैंने बोला था कि 1 o'clock के बाद इसको सेल करना, स्टॉप लॉस रहेगा ये, और टारगेट के लिए स्कैल्प कर लेना, ट्रेल कर लेना स्टॉप लॉस. अगर आप ये देखेंगे इस बेसिस पे था ये विजुअल और ये विजुअल को अगर आप देखेंगे तो एकदम मोस्टली सेम ही है. और 1 o'clock का रीज़न ये था कि 1 o'clock एक स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, जो कि ऑलमोस्ट हुआ. 1 o'clock को जहाँ पर लेवल आया 150, जो स्पाइक आया वही लेवल्स थे 2 बजे तक, फिर एक स्कैल्प शॉट मिला. तो निफ्टी में सेम 3 मिनट में भी वही सेम वो था कि स्कैल्प शॉट. बैंक निफ्टी और निफ्टी ने जिसने ऑप्शन सेल किया होगा आज वो बहुत खुश होगा क्योंकि कुछ हुआ नहीं. बाकी पोजिशनली जैसे मैंने बोला अभी आज भी वैसा ही था, इसी रेंज में था वो, तो मैं बाय तो मैं करूँगा नहीं इसको जब तक अच्छे वॉल्यूम्स नहीं आते ऊपर की तरफ. तो अभी भी मैं सेल के लिए देख रहा हूँ. देखते हैं, कल फ्राइडे है और इस वीकेंड को बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो देखेंगे कल कैसे क्लोज होता है. थैंक यू.